Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learn with SK. So the second sound that we trace after ka is a, trace and color. So we have to trace the sound a and we have to color all these pictures over here because all of the pictures begins with the sound a arrow, a alligator, a apple. Trace, write and draw. यहाँ पे ट्रेसिंग भी है और राइटिंग भी। इसके अलावा आप अपने बच्चे को ड्रॉ करने दें ए से शुरू होने वाली कोई भी चीज़। यहाँ पे मेरे बेटे ने एप्पल ड्रॉ किया है जो राउंड सी शेप में होता है तो उसने राउंड राउंड सा कुछ बना दिया, लेकिन उसकी टीचर ने उसको खुद ड्रॉ करने दिया है। तो आप अपने बच्चे को फ्री हैंड दें, जिस भी तरह से वो ड्रॉ करे ड्रॉ करने दें। ट्रेस, राइट एंड पेस्ट द पिक्चर दैट बिगिंस विद ए। तो कटिंग एंड पेस्टिंग भी एक ज़रूरी चीज़ है, सो इस तरह आप दे सकते हैं पेस्ट करने के लिए ए से शुरू होने वाली कोई भी चीज़। चलिए एक दफ़ा ट्रेस कर लेते हैं। From the dot, you have to go in the direction of the arrow and trace on the dotted line and make a curve first. And then without lifting your crayon, you are going to go up and come down and stop at the end. Okay? The sound is a. Okay, now again try with another crayon. From the dot, go back, turn, go down, then make a curve and you will go up and come down and stop. So the sound is a. Now let's see what begins with the sound a. A ant, a astronaut, a alligator. In this way, your child will able to name the vocabulary that begins with the sound a. A apple, a axe. इसके अलावा भी ट्रेसिंग का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने बच्चे को सॉल्ट ट्रे दें। बहुत ही फन वे में वो बहुत जल्दी ट्रेसिंग सीख जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।